I, Ravindra Narayan Ravi, do swear in the name of God that I will preserve, protect and defend the Constitution and the law. Big news from Tamil Nadu. The Supreme Court on Tuesday declared erroneous and illegal the action of Tamil Nadu Governor R.N. Ravi in reserving 10 bills. The Supreme Court says governor's actions were illegal. Supreme Court defines contours of governor's powers. Supreme Court. Imagine this, your state assembly debates for hours, passes the bill goes to the governor and then silence. No assent, no rejection, no reservation. बिल्कुल वैसे ही जैसे WhatsApp पे ब्लू टिक तो आ गया पर कोई रिप्लाई नहीं आया. Sounds funny, right? But this is a constitutional loophole. And to solve problems like this, India set up Sarkaria Commission on Center-State Relations back in 1980s. So today we are going to tell you why this commission matters, what it said about the reservation of bills, and how its warnings came true in the Tamil Nadu governor controversy of 2025. So what was this commission about? In 1983, due to growing tension between centre and a state, the government was forced to set up Sarkaria Commission. It was headed by Justice R.S. Sarkaria. It worked for 5 years and gave an extensive report comprising of 19 chapters. We will focus on chapter 5, which deals with reservation of bill and ordinances, which gave answer to the very crucial question: when a state legislative assembly passes a bill, how should a governor and a president act upon it? Sounds technical, right? But don't worry, we will make it simple and connect it with the today's headline. Okay, let's quickly decode the constitution here. Article 200 gives the governor 4 options once the bill is passed by the state legislature. First, withhold assent, give assent, return the bill for reconsideration, or reserve it for the president's consideration. Now, once the bill reaches to the president under Article 201, president have 3 options. Firstly, give assent. Secondly, withhold assent. और thirdly, send back the bill to the state legislative assembly. आसान शब्दों में अगर बात करी जाए तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर कभी कभी इस बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डिले भी हो सकता है. किस कारणों की वजह से? कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, या तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन ना होने की वजह से. And that's the real problem. The Constitution of India does not give any specific timeline in which the governor or a president have to act, which means that a bill can be kept pending indefinitely for even years. And that's where Sarkaria Commission comes in. It looked at how Article 200 and 201 were used in practice and guided some conventions to guide governor and a president. सबसे पहले गवर्नर के रोल पे क्लैरिटी दी गई. रिकमेंडेशन ये था कि आर्टिकल 200 के अंदर यूजुअली गवर्नर को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के हिसाब से ही एक्ट करना चाहिए. केवल रेयर और एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही वो अपना डिस्क्रेशन यूज करे, जैसे अगर बिल क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस के बाहर हो, या फिर यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता हो. मतलब सिंपल शब्दों में, मुझे पॉलिसी पसंद नहीं है ये कहकर गवर्नर बिल को रोक नहीं सकते. दूसरी बात, सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया कि 4 सिचुएशंस में ही बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करवाया जा सकता है. पहला, आर्टिकल 31A और 31C जहां फंडामेंटल राइट्स को इम्यूनिटी देने की बात हो. दूसरा, आर्टिकल 254(2) जहां स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो. तीसरा, आर्टिकल 288(2) जहां इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे टैक्स लगाने की बात हो. चौथा, आर्टिकल 304B जहां ट्रेड और कॉमर्स पे टैक्स लगाने की बात हो. हर छोटी बात पे बिल को दिल्ली भेजना एक अनहेल्दी प्रैक्टिस माना जाता है. तीसरा और सबसे क्रूशियल पॉइंट, टाइमली एक्शन. गवर्नर को अपना डिस्क्रेशन 1 महीने के अंदर यूज करना चाहिए और प्रेसिडेंट के लेवल पर भी एक हेल्दी कन्वेंशन हो. आइडियली 4 महीने के अंदर ये डिस्पोज किया जाए. ये बाइंडिंग तो नहीं था, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की कोशिश जरूर थी. चौथा, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट बिल को विथहोल्ड करते हैं तो उन्हें रीजंस कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि सीक्रेट वीटोस और पॉकेट वीटोस से डेमोक्रेटिक फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं.
एक और इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन था ऑर्डिनेंसेस को लेकर। उस टाइम स्टेट्स में एक पैटर्न था, जैसे ही कोई ऑर्डिनेंस एक्सपायर होता उसके लिए बिना एक्ट बनवाए उस ऑर्डिनेंस को दोबारा रीप्रोमलगेट करवा दिया जाता था, जैसे कोई जुगाड़ हो। तो इस पर कमीशन ने बोला कि एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है और ऑर्डिनेंसेस को केवल नेसेसरी और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही यूज किया जाए और लेजिस्लेचर से तुरंत इसके लिए एक एक्ट बनवाया जाए। ऑर्डिनेंसेस का एक्सट्रीम लेवल पर मिसयूज बिहार में देखा गया, जब 1967 से 1981 के बीच गवर्नर ने 256 ऑर्डिनेंसेस को पास किया और इन्हें दोबारा रीप्रोमलगेट करके 1 से 14 साल तक चलाया गया। मतलब कोई चीज जो टेम्परेरी है उसे परमानेंट लॉ के जैसे यूज किया गया। और शॉकिंग बात तो ये है कि इनमें से 69 ऑर्डिनेंसेस को प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के साथ दोबारा लाया गया। तो ओवरऑल सरकार या कमीशन ने एक मैसेज तो क्लियर कर दिया था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का असली काम है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना, ना कि पॉलिटिकल मोटिव्स को बढ़ावा देना। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी डिसीजंस लिए जाए वो ट्रांसपेरेंट वे में और रीजनेबल टाइम्स में लिए जाए। लेकिन जैसा कि हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के इसी लूपहोल का मिसयूज करते हुए गवर्नर ने काफी बार बिल्स को रिजर्व करवाया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर्स केस में एक टाइमलाइन को फिक्स किया है। In Tamil Nadu, the Legislative Assembly had passed 12 bills, mostly about appointment of vice chancellors. So as per Article 200, these bills were sent to the governor R.N. Ravi. But for almost 2 years, he took no action, no assent, no rejection, no reservation. And since the constitution has no provision of timelines for president and governor, these bills stayed pending. Exactly the loophole Sarkaria Commission had warned about. So the state government went to the Supreme Court. Only then did the governor act. 2 bills were sent to the president, 10 were returned to the assembly. The assembly repassed all 10, sent them back, and the governor again reserved them for the president. It was a complete deadlock. The Supreme Court finally stepped in with a landmark ruling. It said that indefinite delay is unconstitutional. And using Article 142, it declared the 10 repassed bills as deemed assented. They became law. And for the first time ever, the court introduced timelines. If a governor wants to withhold the assent or reserve the bill, they must do it within 3 months. If the state legislative assembly repasses the bill, the governor has to give assent within 1 month. If a bill is reserved for the president has to decide within 3 months, and if delayed, reason must be conveyed to the state. This court also made another very important point, which was also recommended by the Sarkaria Commission, that no governor has the power of absolute veto or pocket veto. They can't quietly kill a bill by doing nothing. This judgment is historic because it makes both governors and president accountable. It protects state legislatures from being paralyzed, strengthens federalism, and finally turns the Sarkaria Commission and Panchi Commission's recommendations into reality. So रुको जरा, सबर करो। A high-voltage constitutional debate has erupted as Vice President Jagdeep Dhankar took aim at the Supreme Court's use of Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. Judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. So what does this case really change? Earlier, the governor and a president can hold the bill for years. This was enough to block democratic process. Sarkaria Commission in 1988 raised several issues related to the same, and it was reiterated by Panchi Commission. But nothing had happened in reality. Finally, in the year 2025, in Tamil Nadu's governor's case, the Supreme Court set a specific timeline under which the governor and a president is bound to act upon the bill. If you look at it closely, the story of Chapter 5 of Sarkaria Commission is the story of Indian federalism itself. Slow, sometimes messy, but always moving forward. What started as recommendation in 1980s has now shaped a constitutional rule in 2025. It almost took 4 decades. But one thing is certain today, that if a bill is passed by people's representatives, it deserves a timely answer, not an endless wait. And that is why Sarkaria Commission still matters, because its vision continues to guide how center-state relations evolve even today. Thank you.